Hello and welcome back to EP classes. This is lecture 3 on biological classification for NEET UG class 11. So we were discussing kingdom MONERA, which include bacteria, and today we will be talking of reproduction in bacteria. Now, reproduction in bacteria can occur by three methods: binary fission, sporulation, sexual reproduction. इन तीनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन सबसे मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन विच वी यूजुअली एसोसिएट विद रिप्रोडक्शन, मतलब हम कहते हैं ना कि जब रिप्रोडक्शन होगी किसी ऑर्गेनिज्म में तब उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होगी या उसका नंबर इंक्रीज होगा। वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ बैक्टीरिया में खाली बाइनरी फिशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से होगी। स्पोरुलेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। इट इज़ जस्ट एन एस्केप स्ट्रैटेजी, एस्केप फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। और जब ये हॉस्टाइल कंडीशंस ख़त्म होंगी तो बैक्टीरिया डिवाइड बाइनरी फिशन से ही होगा। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बस नाम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें कोई मियोसिस नहीं होती, गमीट्स नहीं बनते, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरनेशन एब्सेंट है। इंस्टेड कुछ एक आध जीन्स बैक्टीरियम यहाँ वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, यहाँ वहाँ मतलब किसी दूसरे बैक्टीरियम से या सराउंडिंग मीडियम में अगर डीएनए सेगमेंट्स हों उन्हें एक्सेप्ट करेगा, जिसे हम जीन रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। बट डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ भी बाइनरी फिशन ही होगा। इसलिए आई सेड बाइनरी फिशन इज द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। लेट्स टॉक ऑफ दीज मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन in a little detail so we can understand all this in a better way. सबसे पहले binary fission. So like I said, it is the common method of bacterial multiplication or bacterial reproduction under favorable conditions. Favorable conditions में a mature or a parent bacterium divides into two equal sized daughter bacteria. Keep this in mind. In binary fission, the parent bacterium divides into two equal sized daughter bacteria. और यहाँ कोई स्पिंडल नहीं बनेगा जो आप यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हो, स्पिंडल डिवीजन के टाइम। तो थोड़ा देखते हैं ये बाइनरी फिशन होगा कैसे। ओके, तो यहाँ जो न्यूक्लियोइड है, which is also called bacterial chromosome and which we now know is attached to mesosome, it replicates. Here you see it replicating, and at the same time a new mesosome develops and gets attached to the daughter nucleoid. Then this membrane, which is in between the two mesosomes, it grows in a centripetal order. Centripetal matlab inwards. Here you see it growing inwards. And it pushes the daughter nucleoids to the opposite sides. And then between the two daughter protoplasts, cell wall is deposited. The cell wall is deposited. And ultimately, the two daughter bacteria, they separate. So that's binary fission. And under favorable conditions, this daughter bacterium
can divide after every 20 minutes. And if the conditions stay favorable, after 24 hours, about 4.7 into 10 to the power 21 bacteria will be there. And you see, all these bacteria, they came from a single bacterium. Such is the multiplication power of this binary fission method of reproduction. And now let's talk of another method of bacterial reproduction, which is sporulation. बैक्टीरिया वैसे तो स्पोर्स कई तरह के बनाते हैं, but we have to discuss only endospores. So like I was saying earlier, endospore formation in some bacteria is an escape strategy, escape from harsh situations. ये endospores mostly gram positive bacteria बनाते हैं, and it goes without saying that these endospores are dormant, मतलब active नहीं होते, heat resistant होते हैं, desiccation resistant होते हैं. Let's talk a little about the process of the formation of an endospore. And in order to understand this, let's take the example of this endospore formation in a gram-positive bacterium, Bacillus subtilis. Okay, so now if this bacterium is starving, it will start turning itself into a dormant endospore. And we will see how. For this, nucleoid or this bacterial chromosome पहले replicate होगा, and then it stretches into a long axial filament, मतलब horizontally align होगा, और इसके बाद एक polar division site पे membranous septum बनना start होगा, मतलब polar division होगा, which will divide the cell into two unequal compartments. A small compartment called forespore and a larger compartment called mother cell. So remember, here I said polar division. Unlike the central division which we saw in binary fission, यहाँ बैक्टीरियम में एक्चुअली दो पोलर डिवीजन साइट्स हैं, दो पोलर डिवीजन, एक ये एक ये, and the bacterium gets to choose between the two. Okay, तो अभी तक दोनों में से एक डिवीजन साइट चूज हुई, मेम्ब्रेनस सेप्टम बना जिससे दो अनइक्वल कंपार्टमेंट्स बने, and each compartment contains a chromosome. अब इसके बाद जो मदर सेल का मेम्ब्रेन है, it will engulf the forespore. It will engulf the forespore, resulting in a structure encircled by two membranes. यहाँ पे आप देख रहे हो दो membranes. और अब इसके बाद mother cell's chromosome, it undergoes autolysis, or you say it gets destroyed. This space between the two covering membranes of this forespore, यहाँ peptidoglycan layer बननी start होगी, and we call this intermembrane space cortex. Peptidoglycan हमने in detail last video में discuss किया है, so I recommend अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लें. और अब इसके बाद layers of coat proteins will be deposited on the outer membrane. और फिर last में the very important dipicolinic acid will be synthesized in the mother cell,
and it will be taken in by this 4 spore. This dipicolinic acid is important in maintaining dormancy once the endospore is formed, and it helps in spore dehydration, जिससे ये एंडोस्पोर हीट रेजिस्टेंट बनता है. ये जो डिहाइड्रेशन हो रही है डाइपिकोलिनिक एसिड से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी नो जो चीज़ हाइड्रेटेड होती है उसे हीट से काफ़ी डैमेज होता है, तो डिहाइड्रेशन ज़रूरी है. एंड फाइनली द मदर सेल रप्चर्स and releases the endospore. Okay, now although आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, but to make it a little interesting, मैं आपको बोल दूँ ये डाइपिकोलिनिक एसिड इस 4 स्पोर में जाके कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट. ये कैल्शियम डाइपिकोलिनेट कॉम्प्लेक्स फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है. दिस बाइंडिंग ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स इज व्हाट यू कॉल डिहाइड्रेशन. स्पोरुलेशन के बाद we come to sexual reproduction in bacteria. So like I said earlier, बैक्टीरिया में कोई टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि कोई मियोटिक डिवीजन नहीं है, कोई गमीट फॉर्मेशन नहीं है, कोई हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरनेशन नहीं है. यहाँ बस सिंपल सी जीन रिकॉम्बिनेशन होती है. मतलब एक बैक्टीरियम एक आध जीन्स एक्सेप्ट करेगा which will provide new traits to this bacterium. तो ये जीन रिकॉम्बिनेशन और यूसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में 3 तरह से हो सकती है: conjugation, transformation and transduction. Very important. So let's talk of conjugation first. तो conjugation जिन बैक्टीरिया में होगी उनके लिए ज़रूरी है कि वो डाइमॉर्फिक हों. मतलब they have 2 types of cells. One is male or donor, and like we discussed in the last video that in males the plasmid has fertility factor gene or F factor gene, and we write those bacteria as F plus cells which have this fertility factor containing plasmid or F plasmid in them. And the second type of cells are called female or recipient cells, and as they don't have any fertility factor plasmids, you call them F minus cells as well. Now the male or donor bacterium develops 1 to 4 sex pili. The genes for developing these sex pili are in F plasmid of this male bacterium. These sex pili, as we have discussed, are protoplasmic outgrowths. Now, if the male and female bacteria happen to come nearer, sex pili of male get attached to female bacterium and establish a protoplasmic bridge or conjugation tube. Okay, तो ये हमारे पास न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल डीएनए, और यू कॉल इट बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये एफ प्लाज्मिड. और प्लाज्मिड्स में भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. अब कॉन्जुगेशन के टाइम एंडोन्यूक्लियस एफ प्लाज्मिड के 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को काटता है एट ए पर्टिकुलर प्लेस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर. इस ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर पे
एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की. Okay, so this single strand of F plasmid enters F minus और रेसिपिएंट सेल. अब आप कहोगे डोनर बैक्टीरियम में एक ही स्ट्रैंड रहा, तो यहाँ अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड इन द रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, जिससे डोनर बैक्टीरियम का F प्लाज्मिड वापस सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड बना. ये रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म में अभी हमें नहीं जाना. ओके, अब जैसे ही ये सिंगल स्ट्रैंड रेसिपिएंट सेल में एंटर करता है, इट बिकम्स सर्कुलर एंड सिंथेसाइजेस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. और इस तरह एफ प्लाज्मिड दोनों बैक्टीरिया में आ गया. और इस तरह से अब दोनों सेल्स या दोनों बैक्टीरिया F प्लस या यू से मेल और डोनर बैक्टीरिया हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि कई दफ़ा क्या होता है, जैसे ही ये स्ट्रैंड इस कॉन्जुगेशन ट्यूब में होता है, द ट्यूब ब्रेक्स ड्यू टू सम स्ट्रेन और समथिंग. इसके साथ ये स्ट्रैंड भी कट जाता है. मान लो ये यहाँ पे कट गया, एंड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ दिस स्ट्रैंड एंटर्स रेसिपिएंट सेल. रेसिपिएंट सेल में या तो इस फ्रेगमेंट को न्यूक्लियेजेस डिस्ट्रॉय करेंगे और इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेसिपिएंट बैक्टीरियम्स क्रोमोसोम. मान लो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया ये fragment of this strand, and then we call it HFR strain. ये जो बैक्टीरियम है इसको हम कहेंगे HFR strain और HFR बैक्टीरिया. HFR मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. इन HFR strains का यूज़ हम जीन मैपिंग में करते हैं, विच इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस डिस्कशन. अभी जीन मैपिंग हम 12th क्लास में देखेंगे. Now, next method of gene recombination or sexual reproduction in bacteria is transformation. Transformation is the absorption of DNA segments from the surrounding medium by a living bacterium. एक बैक्टीरियम के सराउंडिंग मीडियम में अगर कोई DNA सेगमेंट होगा तो ये उसे अब्जॉर्ब करेगा ऑन इट्स ओन और असेंबल करेगा अपने DNA या उसे अपने जीनोम के साथ. बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट रिसेप्टिविटी for this absorption is only for a brief period of time, mostly when these bacteria have reached end point of their active growth. This transformation phenomenon was discovered by Frederick Griffith in 1928 और ये हम in detail पढ़ेंगे genetics में. Moving on, and we come to another method of gene recombination or so-called sexual reproduction in bacteria called transduction. Now pay attention, this is very important. So transduction, the transfer of genes between two bacteria by means of viruses. तो viruses का होना ज़रूरी है for this transfer of genes from one bacterium to another. And the viruses which infect bacteria are called bacteriophages. Now, transduction can be generalized transduction or specialized, or you also call it restricted transduction. In generalized transduction, these viruses or these bacteriophages carry different genes from one bacterium to another, different genes. And in specialized or restricted transduction, bacteriophages carry the same genes
from one bacterium to another. जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में डिफरेंट जीन्स कैरी होंगे और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में ये बैक्टीरियोफाज सेम जीन्स ट्रांसफ़र करेंगे. ये कुछ देर में हमें क्लियर होगा. Now, in order to understand how this virus or bacteriophage will help in this gene transfer, or you say transduction, let's take an overview of viruses first and also see how they multiply. So viruses are the smallest infectious particles, and if compared with bacteria, viruses are very small. The structure of viruses is very simple, and generally speaking, viruses have a proteinaceous capsid within which lies its genetic material. और कुछ viruses में envelope होता है, usually consisting of a lipid bilayer. और envelope पे ये जो आपने COVID-19 वायरस पे भी देखे होंगे, they are the virulence factors for targeting a particular type of cell. और उस particular type of cell पे receptors होंगे इस virulence factor के लिए. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखते हैं HIV वायरस के जो virulence factor हैं, they complement with CD4 receptors present on helper T cells. ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया. We don't have to go into this. So I was saying कुछ viruses में envelope होगा और कुछ viruses में नहीं. They simply have this capsid within which you will find their genetic material and may have some extra proteinaceous appendages. और जो genetic material होता है viruses का, it can be single-stranded RNA, it can be double-stranded RNA, it can be single-stranded DNA, or it can be double-stranded DNA. In short, काफ़ी ज़्यादा simple structure है viruses का, और इसीलिए all viruses replicate inside other living cells. Because most viruses, as we said, are made of only proteins and one type of nucleic acid, which is either DNA or RNA. They have no organelles, no typical cellular machinery to make copies of themselves. So they infect other organisms and use its organelles and ATPs to make copies of themselves. And earlier we said that the viruses that infect bacteria are called bacteriophages. And here we can see this very simple structure of a bacteriophage, which has this proteinaceous capsid within which is its genetic material, and it has some extra proteinaceous appendages which include this sheath, the base plate spikes, and these tail fibers. These tail fibers help in attachment. Okay, now this bacteriophage injects its genetic material, which if DNA is also called phage DNA, into the bacterial cell. Once inside, phage DNA has two choices or two pathways to replicate. One is lytic pathway and the other is lysogenic pathway. In lytic pathway, the genetic material of bacteriophage takes over and orders the bacterial cell to use its organelles and synthesize this bacteriophage's proteins and genetic material. These bacteriophage proteins and genetic material then assemble on their own and make multiple copies of this bacteriophage virus. And this eventually bursts, or you say lyses,
this bacterial cell, hence the name lytic pathway. इस ब्रेकडाउन में बैक्टीरिया का डीएनए भी टूटता है एंड ऑफन टाइम्स जब कुछ और नए बैक्टीरियोफाजेस बन ही रहे होते हैं और बनने के लिए व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर असेंबलिंग देयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड देयर जेनेटिक मटेरियल और अपना जेनेटिक मटेरियल पिक करने के टाइम दे मे पिक फ्रेगमेंट्स ऑफ दिस ब्रोकन डाउन बैक्टीरियल डीएनए. अब क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंटेड है इसलिए वी से डिफरेंट बैक्टीरियोफाजेस can pick different fragments or genes of this bacterium, and after picking it they'll transfer it to the next bacterium which they will infect now and will thus aid in this gene recombination which we call transduction. अब क्योंकि ये स्टिल असेंबलिंग बैक्टीरियोफाजेस डिफरेंट जीन्स उठा सकते हैं इस बैक्टीरियम के इसलिए ये generalized transduction है wherein earlier we said that the bacteriophage can carry different genes from one bacterium to another. I hope you are able to connect the dots. If not, rewind the video and go through it one more time. So this was a lytic pathway of bacteriophage replication wherein we found a reason of this generalized transduction. Now let's talk of lysogenic pathway of bacteriophage replication wherein we'll discover reason to this specialized or restricted transduction. Now lysogenic pathway of bacteriophage replication में ये injected phage DNA simply incorporates itself with bacterial DNA at a particular position. Bacterium के DNA के साथ associate होके this phage DNA will remain repressed. Repressed मतलब ये अपने लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं बनाएगा और अब जब बैक्टीरियम रेप्लिकेट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल फॉर बाइनरी फिशन बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू अंडर फेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरियोफेज डीएनए will replicate with it but will still be repressed. Okay. Sometimes what happens is ये phage DNA ये dissociate हो जाता है. It comes off. It dissociate हो जाता है from bacterial DNA and then this cut out or excise out phage DNA it becomes active और अब ये अपना असली रंग दिखाएगा. It becomes active and enters lytic pathway. Which we discussed earlier. It enters this lytic pathway and makes multiple copies of itself, and this will eventually burst the bacterial cell, which will release these bacteriophages और जो फिर और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे and all. But here we have to pay attention that when the phage DNA cuts out from bacterial DNA, it takes with it a fraction of bacterial DNA of this particular region only and associates it with its own genetic material. Now if we talk of many bacteriophages, in many bacteria they'll still take away the same portion of bacterial DNA because we said that phage DNA gets attached to bacterial DNA at a particular position only.
So they'll take away the same genes time and again and will transfer these genes to other bacteria which they'll infect. और इस ट्रांसफ़र ऑफ सेम जीन्स को अर्लियर हमने कहा था स्पेशलाइज्ड और रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन. स्पेशलाइज्ड और restricted transduction में हमने देखा था that the bacteriophages carry same genes from one bacterium to another. So in lysogenic pathway of replication of bacteriophages में हम देखते हैं specialized और restricted transduction.